हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says, what is left for genetic researchers to do now that the Human Genomes Project has determined nearly complete nucleotide sequence for all human chromosomes? Explain. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? What will be our key concept? Key concept is human genome. Human genome में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं? इट इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन द ह्यूमन जीनोम और जीन. मोस्ट बेसिक सीक्वेंस इन द जीनोम, राइट? तो सपोज कोई सीक्वेंस है लाइक दिस A T T G G C. Scientists can make the complementary sequence of this sequence, right? Complementary sequence will be complementary sequence of this sequence. This sequence will be complementary sequence क्या होगा? Complementary sequence will be T A A C C G. That is T for thymine, A for adenine, C for cytosine, G for guanine. यहाँ पे क्या होते हैं? T is bond with A by 2 hydrogen bond. These are H bond, right? And C bond with G by 3 hydrogen bonds. So these are also hydrogen bond, right? These are hydrogen bond, H bond, right? So scientists क्या कर पाएंगे? They can DNA to DNA क्या होते हैं? रेप्लिकेशन. DNA to RNA by transcription. mRNA to protein by translation, right? So after nucleotide sequence, protein sequence can be made. After protein sequence is made, scientists can evaluate the function of the protein, the functions of each protein. Each protein का जो functions होते हैं, scientists can determine them also, right? जो कि हमें कोई disease को cure करने में help करेगा. It help to cure diseases easily, right? Easily कोई disease है तो उसे cure कर पाएंगे by evaluating the functions of the protein, each protein. So after nucleotide sequence, scientist जो है वो प्रोटीन सीक्वेंस बना पाएगा जो कि इवेल्युएट कर पाएगा डिफरेंट प्रोटीन का फंक्शन बॉडी में और जो हेल्प करेगा डिजीज क्योर करने में, राइट? इवेल्युएट ईच प्रोटीन इन बॉडी फंक्शन.
So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.